Good morning to all of you. Myself, Ms. Vaishali Verma, nursing tutor of Index Nursing College. Today we discuss about nursing as a professional. So, what is nursing as? क्या होता है nursing as a professional? First of all, we learn about nursing. Nursing क्या होता है? Nursing की definition. Virginal Henderson defined nursing in fundamental term. The unique function of the nurse is to assist the individual risk or avail in the performance of those activities contributing to the health or its recovered or to be peaceful death that he would perform ability if he had the necessary strength, will or knowledge, and to do this in such a way as to help him again independence as rapidly as possible. Basic nursing principle: safety, therapeutic effectiveness, comfort, use of resources, good work of individuality. Object: the prepared nurses who will give expert bedside nurses care, provide an integration of a health and social aspect, theory and the practice, provide an adequate sound scientifically foundation to understand the functioning of body and mind in the health and disease, prepare to work cooperatively, develop sense of responsibility, provide opportunity to develop a skill and personality, upgrade nursing as a professional. Concept of nursing: the task of nursing are to promote health, to prevent disease, to help ill person to healing, to assist the healing, to assist the dying patient to pass away with the quantitative peace and the dignity to ease suffering. The client is a holistic human being, including suffering person and healthy person. Concept of nursing: the working place is not only in the hospital but also in the family, the community, and the whole society. Nursing is not only a science but also an art. The nurse science attaches importance to how beings, living environment, and the interrelation between human being and its environment. The nursing science is a gradually performed and developing science. Philosophy: the study of the fundamental nature of a knowledge, reality, and existence, especially when the considered as an academic discipline, a theory or attitude that acts as a guiding principle or a behavior. Philosophy of nurse. Uh, Philosophy of nurse included beliefs and value with the regular to the mean range, general and specifically means as the learner, teacher, nurse, client, and the brief about the health, illness, society, nurses, learn and learning etc. It includes spiritual, moral, and intellectual. स्पिरिचुअल मतलब जो रिलीजियस को रिलेटेड जो होता है उसको अपन स्पिरिचुअल बोलते हैं. मोरल उनको पता होना चाहिए कैसे बिहेव करता है, राइट कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए उनको. देन इंटेलेक्चुअल to provide a systematic development and training for a fulfillment of nursing function. जो भी intellectual मतलब अपना और पेशेंट का इंटेलेक्चुअल बिहेव होना चाहिए. इमोशनल नीड होना चाहिए, मतलब नर्स मस्ट बी एबल टू फंक्शन एज अ म्यूचर. अपने को क्या है, जो भी पेशेंट का है उसका अपने को इमोशनली नीड प्रोवाइड करवाना है. फिजिकली टू प्रमोट द हार्मोनियस डेवलपमेंट, फिजिकल नीड टू प्रिजर्व एसेंशियल ऑफ हेल्थ. फिजिकली नीड हमको पेशेंट को देना है कि अपन उनका हेल्थ को इम्प्रूव कर दे. सोशल नर्स इज लाइक्ड विद अ सोशल कल्चर इन विच नर्स एक्टिविटीज आर कैरिड आउट. अब सोशल में नर्सिंग की जो एक्टिविटीज़ है वो कैरिड आउट होती है. फंक्शन ऑफ नर्स, अब क्या फंक्शन है नर्स के? केयर गिवर, नर्स
का फंक्शन होता है वो एक केयर गिवर होता है. द केयर गिवर रोल हैज़ traditionally include those activities that assist the client physically and psychological while the presence of client dignity. Caregiver accommodate the physical, psychological, developmental and cultural spiritual level. कम्युनिकेटर एक नर्सिंग क्या होता है, एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा रोल निभाती है. उसको उसके क्लाइंट के साथ क्लाइंट को सपोर्ट करना है, उससे कम्युनिकेट करना है, उसका जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करना है. ये सब कम्युनिकेट करके नर्सिंग का जो वर्क है वो वर्क रोल है. एंड टीचर कैसे, नर्सिंग एक हेल्थ टीचर है जो अपने क्लाइंट को, पेशेंट को हेल्थ एजुकेट करती है, उसके हेल्थ को लेके, उसका जो भी हेल्थ नीड है उसके बारे में पूरा उसको एजुकेट करती. देन क्लाइंट एडवोकेट, नर्सिंग क्या है, क्लाइंट का एडवोकेट भी है. वो अपने क्लाइंट का एडवोकेट बनती है, उसको अपने क्लाइंट को बताती है कि आपका क्या राइट्स है, आपका लीगली क्या राइट्स है. ये सब वो नर्सिंग, जो भी नर्सिंग है वो अपने क्लाइंट को इसके बारे में बताती है. इसलिए वो एक क्या हुई, नर्सिंग एडवोकेटर हुई. काउंसलर कैसे हुई, नर्सिंग जो रहता है वो क्या करती है, अपने जो क्लाइंट है उसको रिकॉग्नाइज करती है, कॉप अप करती है, उसको स्ट्रेसफुल करवाती है, साइकोलॉजिकली उसको सोशल प्रॉब्लम से उसको डेवलप कराती है, उसको उसमें खुद में पेशेंट में क्या करती है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को डेवलप कराती है. उस पेशेंट में, क्लाइंट में क्या करती है, जो इंटरपर्सनल मतलब जो उसका पर्सनल ग्रोथ है उसको प्रमोट करवाती है. ये सब काम क्या रहता है, काउंसलिंग में नर्सिंग का रहता है. तो नर्सिंग अपने क्लाइंट को ऐसे काउंसलिंग करती है. देन चेंज एजेंट, a nurse acts as a change agent when the assisting others, that is client, to make a confidential in their own behavior. Nurse also often the act to make a changes in the system such as client care if it is not helping a kind return to health. क्या चेंज एजेंट, अगर क्लाइंट के हेल्थ में कोई भी मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा है, तो वो क्या करेगी, अब जो भी एजेंट है उसको अब चेंज कर देगी. लीडर, नर्सिंग एक क्या होती है, लीडर होती है जो वर्क को इन्फ्लुएंस करती है, लीडर रोल को प्ले करती है. The leader influence others to work together to accomplish the specific goal. The leader role can be employed at a different level: individual, client, family, and the group of a client, congregate, or the community. Effective leadership is a learned process required an understanding of a needs and goal that motivate the pupil, the knowledge to apply the leadership skill and the importance skill influencing other. लीडर क्या करती है, वो किसी भी चीज़ के बारे में लोगों को इन्फ्लुएंस करती है एज अ लीडर बन के. मैनेजर होती है, उसको कैसे अपने फैमिली को कैसे हैंडल करना है, फैमिली मैनेज करना, उस क्लाइंट का वर्क मैनेज करना एज अ सुपरवाइज़र, वो सब अपना मैनेजमेंट के थ्रू पूरा करती है. तो एज अ वो मैनेजर हुई. केस मैनेजर एज अ कोई भी क्लाइंट का केस हुआ या कुछ भी हो उसको केस मैनेज करती है. नर्स केस मैनेजर वर्क विद द मल्टी डिसिप्लिनरी हेल्थ केयर टीम टू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ केस मैनेजमेंट प्लान एंड मोटर आउटकम. अब जो भी एक एट द टाइम मल्टी डिसिप्लिनरी हेल्थ केयर टीम रहती है, उसको एट द टाइम ऐसा रहता है कि केस
मैनेज करना रहता है, तो एज अ केस मैनेजर भी नर्सिंग होती है। देन क्वालिटी ऑफ नर्सिंग, क्या क्वालिटी है नर्सिंग की? केयरिंग नेचर की होती है। एम्पैथिक एटीट्यूड, एम्पैथिक मतलब अपने पेशेंट के बारे में वो उसको पता रहता है कि वो कैसे केयर कर रही है, क्या कर रही है, तो एम्पैथिक एटीट्यूड होता है उसका। डिटेल ओरिएंटेड, उसको अपने पेशेंट के बारे में पूरी डिटेल रहती है, इसलिए वो डिटेल ओरिएंटेड रहती है। देन इमोशनली स्टेबल ऐसी होती है कि वो अपना इमोशन अपनी तरफ रखती है, उसको क्लाइंट को जितना इमोशन देना है उतना देती है, उसको इमोशनली सपोर्ट करती है, उसके लिए इमोशनल नहीं होती है। अब अडोप्टेबल, मतलब people are unpredictably at the best of time but become even more so under stress. So nurse typically work day will require reflexibly and adaptably. अब अडेप्टेबली मतलब उस अगर पेशेंट सीरियस वीरियस हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, जो नर्सिंग स्टाफ उसका टाइम बढ़ जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो उसकी वो क्या होती है? अडेप्टेबल होती है। हार्ड वर्किंग, नर्सिंग हार्ड वर्कर होती है, इतना वर्कलोड होने के बाद भी वो अपना वर्क पूरा करती है, अपना यूनिट को पूरा मेंटेन रखती है। क्विक थिंकर, एट द टाइम उसे क्या एक्शन लेना है, कैसे क्लाइंट को स्टेबल करना है, उसके क्विक थिंकिंग होती है, कैसे पेशेंट को ऐसा क्या हो प्रॉब्लम आ रहा है। देन फिजिकल एंड्योरेंस होती है, nurses are on their feet all day, sometimes 12 or more hours at the time, and are often required to assist the patient great activity and require the physical strength. फिजिकल एंडोरेंस होती है, मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि नर्सिंग को फुल डे अपना फिट पे मतलब खड़े रहना पड़ता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है 12 घंटे तक वो खड़े रहती है, देन फिर भी उसको फिजिकली वो स्टेबल रहती है। गुड जजमेंट, उसको जजमेंट उनका बहुत अच्छा रहता है कि पेशेंट को क्या नीड है, उसका क्या स्पेशली उसको ड्रग में दे रही हूँ। गुड कम्युनिकेशन स्किल, उनका क्या होता है? पेशेंट और फैमिली के साथ, डॉक्टर के साथ उसका कम्युनिकेशन जो स्किल रहता है वो बहुत गुड रहता है, इसलिए वो गुड कम्युनिकेशन स्किल उनकी होती है। रिस्पॉन्सिबल, पेशेंट का पूरा इनटेक आउटपुट मेडिसिन ये सब उनके अंडर आता है, इसलिए वो रिस्पॉन्सिबल होती है। अब पढ़ते अपन क्वालिटी ऑफ प्रोफेशनल। अब क्वालिटी क्या है प्रोफेशनल नर्स की? ट्रूथफुलनेस, लॉयल्टी एंड हॉनेस्टी, लव फॉर द फॉलोमेंस, केयरिंग, कमिटमेंट, कोऑपरेटिव, जनरस, एक्सेप्टेंस, assertiveness, punctuality, fairness, self-esteem and tolerance, apprehensiveness, creativity, imaginative, confidence, empathy, humor, kidney, kindness, morality, courage, accountability, authenticity, alertness, intelligence, efficiency, self-discipline, openness, independence। ये सब क्वालिटी ऑफ प्रोफेशनल नर्स है। अब नर्स को अपन एक शॉर्ट फॉर्म में समझाते हैं। नर्स क्या होती है? नोबिलिटी, नॉलेज, यूजफुलनेस, अंडरस्टैंडिंग, राइटनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिंप्लिसिटी, सिंपथी, efficiency एंड इक्विपमेंट। Profession is a calling that requires special knowledge, skill, and preparation. An occupation with an ethical component that is devoted to the promotion of a human and the social welfare. A professional criteria of profession to provide a needed service to the society, to advance knowledge its field, to protect its members and make it possible to practice effectiveness. Blixler and the Bixler criteria of professional. A professional is a form of employment, especially one that is
respected in society as a harmful and is possible only for an inducted person that after training in some special branch of knowledge. Characteristics of professional. A basic professional requires an extended education of its member as well as basic leader function. A profession has a theoretical body of a specialized knowledge leading to define the skill, ability, and normal. The professional provides a specific service. Members of a professional has a autonomy in the basic make and practice. The professional has a code of ethics for a practice, authority to control its work. Nurse as a profession. Nurse as a profession क्या होती है? Nursing. Nursing is a discipline involved in the delivery of a health care to the society. कि नर्सिंग के एक डिसिप्लिन है जो क्या करती है, इन्वॉल्व करती है एक हेल्थ केयर सोसाइटी, मतलब हेल्थ डिलीवर करती है हेल्थ केयर को सोसाइटी के अंदर. इज़ अ हेल्पिंग प्रोफेशन. ये जो नर्सिंग है ये क्या एक हेल्पिंग प्रोफेशन है. इन सर्विस ओरिएंटेड टू मेंटेन द हेल्थ एंड वेल बीइंग पीपल. इज एन आर्ट एंड साइंस. नर्स oriented from a Latin word nutrix, to nourish. Elements: accountability, autonomy, alternance as oscillation. कैटेगरीज ऑफ नर्सिंग प्रोफेशनल. अब क्या क्या कैटेगरीज है नर्सिंग प्रोफेशनल की? स्टाफ नर्स, सीनियर स्टाफ नर्स, नर्स सुपरिटेंडेंट ग्रेड सेकंड, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ग्रेड फर्स्ट, नर्सिंग ट्यूटर, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर, प्रिंसिपल स्कूल ऑफ नर्सिंग, लेक्चरर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग प्रोफेशनल, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, प्रोफेसर College of Nursing, Principal College of Nursing, a Senior Associate Director of Nursing, Public Health Nursing, District Family Welfare BRIA. Values and Code of Ethics. Values: freely choose value underlying all the moral dilemmas through not all a value or a moral value. People value about the work, family, religion, politics, money, and the relation. Important. Value influence the decision and the activities such as nurses ethically division makes beliefs or attitudes about the worth of a person, object, idea, or activities. And now value and ethics. Value and ethics are inherent in the all nurses act. A value is a strong personal belief and idea that a person strive upward. Your value reflect the cultural and the social influence. The relationship and the personal needs vary among people and the developing change over the time. Definition: value and nutrition define attitudes about the worth of the person, ideas, and activities. Type of values: societal values, personal values, professional values. Professional values the provides the functional of nursing practice and guide the nurse interaction with the colleagues and public. Nurse professional values are required for the code of ethics experience in teaching and purse. Essential nursing professional values: altruism, autonomy, human dignity, integrity, social justice. Development of values and value transmission. An individual is not born with the values, rather, values are found during the lifetime from information gathering from the event, family, and culture. As a children
observe the activities of other, they quickly learn that how has have low value of them. Common modes of value transmission: modeling, moralizing, listening, fire, rewarding and punishing, responsible choice. Modeling. Through modeling, the children learn that is of high or low value by the observing parents per significant other. Thus, it learn to socially acceptable or a spiritual behavior. Clarifying client value, process and how. List alternative. Ask are your consideration of the alternative course of activeness and tell me about them. Examine possible consequence of choice. Choose fairly. Feel good about the choice. Affirm the choice. Act on the choice. Act with the point. कोड ऑफ इथिक्स. अब क्या कोड ऑफ इथिक्स है? नर्सिंग के. Ethics refers to the moral code of nursing and is based on the obligation of the service and respect of human life. A code of ethics is a set of ethical principles that are accepted by all members of a profession. A code of ethics is a set of ethical principles that is shared by the members of a group, reflects that their moral judgment over the time serves as steady for their professional activities. Purpose: standard for the behavior of nurse and provide a general guidance for nursing activity, help to distinguish the between right and wrong, enable to correct the decision, protect the right of individuals, uses. Knowledge acknowledge the rightful place of individual in the health care delivery system, constitute towards the empowerment of individual to decomprehend the responsible for their health and well-being, contribute to quality care, identify obligation in the practice, research and relationship, inform the individual, family and committees and the other informational about the expiration of nurse function, to inform the public about the minimum states of the profession, to provide a sign of a professional commitment and the public in the service, to outline the major ethical consideration of the profession, to provide a general guidance of the professional behavior, to guide the professional in the safety goal. अब क्या एथिकल प्रिंसिपल है नर्सिंग के? तो एक क्या है? ऑटोनॉमी है, बेनिफिशियंसी है, नॉन मेलेफिशियंसी है, जस्टिस है, वेरासिटी है एंड फेबिलिटी है. ये सब क्या है? एथिकल प्रिंसिपल है. रिस्पेक्ट एंड ऑटोनॉमी. क्या? बेनिफिशियंसी, जस्टिस एंड वेराइटी. फिडिलिटी क्या है? कीप कमिटमेंट बेस्ड ऑन द वर्च्यू एंड केयरिंग. कॉन्फिडेंटली क्या है? आपको पिक्चर में दिख रहा है. कॉन्फिडेंटली क्या है? प्रैक्टिशनरी एसोसिएशन स्टडी मतलब PSC. इथिकली इश्यूज जो है वो रिफ्यूज टू द ट्रीट जेनेटिक रिसर्च, राइट टू रिफ्यूज ट्रीटमेंट, डू नॉट रिसस्टिकेट ऑर्डर. Nursing code of ethics. Purpose: inform the public about the minimum standards of profession and help them understand professional nursing condition, provide a sign of the profession commitment to the public and service, outline the major ethical consideration of a profession, provide standards of professional behavior, remind nurses of a specific responsibility they assume when the caring of sick. Ethical
dilemma occurs when there is a conflict between two or more ethical principles. No current decision exists. Nurse must choose between two alternatives that are equally unsatisfactory. Occurs as a result of a difference in the beliefs, ethical INC Code of Professional Conduct for Nursing in India. Professional responsibility and the accountability. Apprehensive sense of self-worth and maturity. It maintains the standards of personal conduct reference credit upon the professional carrying the responsibility of the framework the profession bonding they accordingly maintain the practice standards by the Indian Council of Indian Nursing Council the accordingly for own decision and activities in compensation. Legal consideration. First Nursing Law, Nursing Registration 1903, Indian Nursing Council Act 1947, embedded 1957. Legal implication: torts, assault, battery, negligence, malpractice, frowned, flash, imprisonment, invocation of a legal documents, advance directives, do not resuscitate order, informed consent. Legal responsibility. Registration, legal liability, act of negligence, medico legal case, correct identity, left against medical advance, patient property, drying declaration, wills, examination of rape case, artificial human insemination, poison case, Consumer Protection Act. Nature and scope of nursing practice. Nursing contribute to the healthcare within a multidisciplinary term. They are individually accumulatable for their action and perceived with the struggle. नेचर एंड स्कोप ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस. क्या नेचर होता है और क्या स्कोप होता है नर्सिंग प्रैक्टिस का. प्लानिंग करता है वो गिव कर प्लानिंग करके जो भी स्कोप अपन ने नर्सिंग के पढ़े थे वो सारे नर्सिंग के स्कोप इसमें भी आना है नर्सिंग स्कोप. देन कोड ऑफ एथिक्स अपन ने पढ़ा है पूरा. अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन के द्वारा क्या कोड ऑफ एथिक्स होता है. ट्रेंड इन नर्सिंग क्या ट्रेंड है. Basic nursing education in communication college and university, a growing variety of employees setting growing emphasis on the aspect of nursing that is characterize it is an profession, increasing the political influence of nursing influence on the healthcare policy and the practice. यहाँ अपना